Welcome to Nifty Banknifty analysis quickly in under 7 minutes, including top stocks and important levels. Starting things off with Nifty's daily chart, what we can see here is कि 50 DMA से बाउंस किया था उसने. कल मैंने बात किया था कि 50 मूविंग एवरेज पर है, सो डिसाइडिंग फैक्टर जैसा हो जाता है और अभी बाउंस कर लिया है उसने. आज एक्चुअली गैप अप ओपन था. रीजन बीइंग ग्लोबल क्यूज एक्चुअली इंप्रूव्ड अ लॉट. येस्टरडे ही वी डिस्कस कि डाउ ने वीकेंड में बोला कि मैं नीचे जा रहा हूं, तुम लोग भी नीचे आ जाना. मंडे को नीचे आया. Tuesday said that hey I am coming up, so इसलिए हम लोग का मार्केट आज ऊपर आ गया. So that is what we are seeing. Again in a very रफ सेंस दैट्स व्हाट वी आर सीइंग. एक रेजिस्टेंस लेवल अगर बात करते हैं तो ये जो है 19 जुलाई का जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा शायद. 60 मिनट पे देख लेते हैं एंड वी विल गेट अ बेटर आइडिया. वी कैन सी 60 मिनट पे 200 MA इज राइट देयर. एंड इफ वी गेट द लेवल्स हियर, ओके लेवल्स यहाँ पे लाते हैं, वी कैन सी 835 का जो लेवल है, हम लोग ने ये पॉइंट पे 1000 बार तो मैंने बोल ही दिया होगा दैट 835 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. रीजन बीइंग वी कैन सी it's been like a very good important line of defense for the bulls and the bears depending on which side you're on. Reason being हम लोग ने सिर्फ एक बार सस्टेन्ड क्लोज देखा है. एक बार ही उसने 835 के ऊपर 2 दिन से ज्यादा क्लोज दिया था. इनफैक्ट 2 दिन क्लोज दिया था, तीसरे दिन वो नीचे आ गया था. ये वाला जो कैंडल है वो. सो 835 के ऊपर अगर रह पाता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट इन माय व्यू फॉर निफ्टी. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. Moving averages, above all moving averages, 13 MA has started to slope upwards, which is a good sign. Let's see how it goes. RSI above 50, which means bullish bias. Intraday chart देख लेते हैं एक मिनट just to understand. We can see starting में ओपन से थोड़ा ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आया, थोड़ा सा नीचे आ रहा था, बट देन ओवरऑल अगेन मोमेंटम वाज ऑन द बुलिश साइड. देन आफ्टर 1 PM और सो वी सॉ इट स्लाइडिंग क्वाइट लॉट. इनफैक्ट ये कैंडल पे आई अज्यूम, ये कैंडल पे जो 2:15 की कैंडल है, 2:15 की जो कैंडल है, एट दिस पॉइंट possibly many people might have been on the short side given that the volumes are very high. So RSI 50 was also breached. In fact RSI 40 भी breach हो गया. बट ये जो कैंडल है 2:30 के बाद वाली, दैट इज व्हाट चेंज द गेम एंड दिस वाज पॉसिबली शॉर्ट कवरिंग फॉर दिस कैंडल. सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर सीइंग. बिकॉज सेंटिमेंट समझ लेते हैं, थर्सडे को ऑलवेज यही सब होता है. एंड थर्सडे को वी सी many times, not every time but many times we see such moves happening. So it's a very normal occurrence, I would say. Personally speaking, obviously the name of the game is knowing when that normal occurrence is actually going to take place. Daily chart दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का, और we can see इसकी 50 MA resistance. Weirdly enough, funnily enough, निफ्टी 50 MA support था, बैंक निफ्टी 50 MA resistance है. बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है, और today was nothing else, nothing different. Moving averages के हिसाब से भी 13 MA sloping downwards below the major moving averages. That's not a very good sign. We can see this resistance level acting up here, 34,972 very clearly. ड्राइंग्स लेके आता हूँ. ड्राइंग्स में हम लोग देख सकते हैं कि ये जोन में ही है. इनफैक्ट कल हम लोग ने बात किया था कि अभी शायद ये वाला जो जोन है उधर आ सकता है, वो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, और सपोर्ट उसको मिला है 34,644 पे. वी कैन सी कि एक्चुअली 5 मिनट चार्ट देखते तो हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी काफी, आई डोंट वांट टू से बेरिश, बट काफी वीक था ड्यूरिंग द डे. 200 MA का सपोर्ट, 200 MA का रेजिस्टेंस था उसको 5 मिनट के चार्ट पे. एंड देन फाइनली इट वाज एबल टू क्लोज अबाउट 34,644, व्हिच इज इंपॉर्टेंट. नाउ टॉप स्टॉक्स की बात करते हैं, रिलायंस से स्टार्ट करके. एंड रिलायंस से बात कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द रिजल्ट्स. सो आई एम नॉट गोइंग टू स्विच टैब्स क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है बहुत टाइम. But if you search on your own BSE result calendar, you will see that Reliance along with many other important stocks have their results. So please make sure you are checking that. ऐसा है तो I can try to get the link or something in the description. So make sure you check the description. But वो जरूर देखना एक बार. Reliance, what we can see here on the daily chart is that 2125 resistance is still there. So एक बार ये क्रॉस करता है, then I think should be good. इंटरेस्टिंगली इनफ, ठीक है, इंटरेस्टिंगली इनफ लास्ट टाइम जब उसने 2125 लेवल ट्राई किया था तभी RSI 50 रिजेक्ट हो गया था. अभी RSI 50 के ऊपर है, बुलिश बायस पॉसिबली आ गया है. 50 MA के भी ऊपर है, विच इज ऑब्वियसली अ गुड साइन. एक्चुअली 60 मिनट देखने की जरूरत नहीं है, वीकली बस एक बार देख लेते हैं. रिजल्ट है तो देखना बनता है. वी कैन सी 50 MA और 13 MA सपोर्ट. 2125 तोड़ दिया, देन आई थिंक इट हैज गुड पोटेंशियल. नेक्स्ट स्टॉक इज HDFC बैंक. HDFC बैंक वी कैन सी 200 MA बाउंस. दिस इज द रेड जोन हियर. कि रेड जोन है तो देखते हैं, मे बी सम कंजेशन हैपनिंग एट दिस लेवल. बट या दिस कैंडल वाज वेरी गुड. इनफैक्ट कल मैंने 200 MA लाया नहीं था, बट स्टिल आई फेल्ट दैट सम गुड बाइंग वाज हैपनिंग.
200 mA लाते हैं, we can, it sort of explains things a lot. Last time 200 mA के पास आया था, we can see it was quite some time back. In fact, 2020 में था. So very important candle for HDFC Bank yesterday. We missed on that, but ठीक है, better late than never. We can see RSI is still below 40, which is not a very good sign. Gap filling आज try किया था, but fail कर दिया, which is again not a very good sign. Infosys, what we can see, new all time high almost. Okay, all time high close है, तो range तोड़ दिया है उसने. कहाँ से support लिया? 1534 से. So this fib extension is working very well. In fact, if you want an even better example of fib extension, BSE Limited, okay, मेरा holding का एक stock है. BSE Limited पे fib extension 1337 का ही resistance आया. Yet another example I'll give you is DLF. DLF again थोड़ा off topic जा रहा है, but this is also very important. This will just give you additional knowledge. DLF 1315 का जो level है 315 level, we can see there was a resistance at this level, breached that, and then we can see 340 levels को थोड़ा reject कर रहा है. It hasn't really attempted those levels yet, high being 338.8, but it is still facing some hesitation. So overall, it's very important. Now coming back to track on the top stocks, and we can see HDFC also 200 MA. ये वाला जो जोन है उसके भी साथ है. सो आई थिंक HDFC लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. मैंने कल बोला था कि 2500 रिटेस्ट हो सकता है. आज का हाई 2493 है, सो वेरी क्लोज. the real hesitation possibly might come at 2550 के आसपास, and before that it might come at 2515. वहाँ पे 50 DMA है. So let's see how that goes. Next stock that we're looking at is ICICI Bank. ICICI Bank हम लोग देख सकते हैं कि bounced up from the 50 moving average above the 13 moving average, very similar to Nifty above RSI 50 also. So that looks very good. So let's see क्या होता है. 665 is the resistance, and I will keep my eyes peeled out for that. Kotak Bank देख लेते हैं. It is still in that zone. Highs reject हो गए थे. In fact, many banks have seen highs rejecting, and RSI is just at 40, 39.77. Let's see how that goes. SBI 50 MA above 420, which is a good sign in my view. But we can see RSI has made a lower low, which is not a very good sign. Momentum slowdown हो रहा है. RSI 50 के नीचे है, but ठीक है, that's to be expected. And then Axis Bank, we can see 50 DMA support, 13 MA resistance, and it's possibly still stuck in this zone which was here, this this sort of consolidation area that was there, and RSI is also below 50. So price level similar है, RSI नीचे आ गया है. Again, that shows lack of momentum, which is, you don't need RSI to tell you that momentum has been lacking. So that's what we're seeing in the markets. By the way, if you're confused about what I said yesterday, make sure you check yesterday's video and subscribe for a lot more videos, not just related to daily analysis, but more as well. That's it for this one. See you in the next. Happy trading. Happy Friday.